Good afternoon and welcome to Moneycontrol live stream. You're watching Closing Bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Indices managed to make a good comeback from the day's lows, but still closing in the red. The NSE Nifty was down by almost 150 points at one stage of the day, but however, it managed to trim its losses towards the close. Mid-cap stocks once again failing to build on yesterday's rally. They also were under pressure today. The Nifty Volatility Index rising about 1% to close at 13. So overall, once again it seems to be a back to square one situation yet. Actually and अगर हम सेंटो आज के मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये था कि आईटी से लीडरशिप आएगी, रिलायंस से लीडरशिप आएगी, लेकिन दोनों ही आईटी स्टॉक्स और रिलायंस में एक डाउन ट्रेंड आप देखेंगे पिछले 1-2 दिनों से हो रहा है. और इफ़ यू लुक एट द बैंक्स ऑल्सो, आज निफ्टी बैंक में सेंटो लगभग 500 पॉइंट का इंट्राडे डिक्लाइन, 500 पॉइंट से ज़्यादा का इंट्राडे डिक्लाइन आपको आता हुआ नज़र पड़ा. और मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस में भी आपको करेक्शन आता हुआ नज़र पड़ा. इसीलिए ब्रॉडली आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 था, यानी 1 एडवांस के सामने, एक बढ़ते हुए शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स. तो कहीं ना कहीं आज मार्केट की ब्रेथ काफ़ी वीक थी. ग्लोबल क्यूज़ भी वीक थे, लेकिन क्लियरली जो एफआईआई का फ्लो होना चाहिए, जो डीआईएस की खरीदारी होनी चाहिए, काफ़ी लैकलस्टर ट्रेडिंग सेशन था. Yes, and among the prominent gainers today we had Larsen and Toubro, Hero Motocorp, Ultratech and Asian Paints, while among the prominent losers we had Adani Enterprises, Nestle, SBI Life and HDFC Life. And with that, let's move on to the stocks that caught our attention this afternoon. City Union Bank is the first stock on our watch list. Now the stock had a pretty volatile week after its disappointing third quarter numbers. Now according to Moneycontrol Pro, the big cause of disappointment was that the growth in advances was much lower than that. There's been a significant slowdown in the growth in advances, and also if you look for the fiscal as a whole, the loan book has grown by just about 12%, whereas the industry is growing at about 17%. Now for a small bank like City Union Bank, typically you would expect that the loan growth rates are much faster. That does not seem to be the case. Secondly, you also now have the CASA rate, which is at around 29%, which is also below industry standards. And now with the stock beginning to underperform, once again the focus seems to have shifted to some of the weak points of the bank, notably one being that it is geographically quite concentrated in Tamil Nadu. But the big concern which could really weigh on investor mind and probably prevent a re-rating in the near future is the fact that the RBI is spotting divergence in its NPAs and provisioning norms, and while those have been fixed in the third quarter, that still is something that investors would be a little careful about. And lastly, you also have the reappointment of CEO and MD N. Kamakodi, who has been at the helm since 2011. Now this is something that investors are closely watching out for. In case there is a change, according to Moneycontrol Pro analyst Neha Dave, typically what happens is that whenever an outsider comes in, usually there is a bit of cleaning up, and that in turn could lead to some kind of short term pressure. So the stock has managed to kind of move up a bit after that big sell off seen on Wednesday, but still it's quite down sharply for the year. Absolutely, and the point of the reappointment of Mr. Kamakodi is something that will hold the key to the stock performance. Obviously मार्केट थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड थी आरबीआई का जो डाइवर्जेंस एनपीएस को लेके आया उसको रिलेटेड, बट आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू इवन फॉर कोटक बैंक, बिकॉज यू नो मार्केट सीज वेरी लेस लाइकलीहुड ऑफ उदय कोटक्स टेन्योर also moving beyond the next 12 months or so. I think RBI is pretty clear after we had RBL Bank, Yes Bank kind of events wherein RBI had to intervene in various forms. Not talking particularly about the concerns in those banks, but RBI proactively tries to see that the management really is hands-on as far as the bank's health is concerned, because at the end of the day, bank is nothing but a custodian of depositors, and the concern of RBI has always been that the depositor should never be at risk. तो शायद इसीलिए आप देखेंगे कि जो पहले लंबे टेन्योर्स होते थे मैनेजमेंट्स के बैंक्स में, स्पेशली इवन इन प्राइवेट बैंक्स,
आपको वो ट्रेंड शायद चेंज होता हुआ नज़र पड़े। सिटी यूनियन बैंक में कंसर्न्स थे और कंसर्न्स नेस्ले के अर्निंग्स में भी थे। ये एक लास्ट निफ्टी कंपनी है जिसने अर्निंग्स रिपोर्ट की। सेंटो मैगी में इन्होंने एक प्राइस हाइक लिया। 10 रुपये की जो मैगी मिलती है अभी लगभग 14 रुपये के आसपास सिमिलर SKUs आपको मिलते हैं। 15 रुपये का भी एक वेरिएंट है जहाँ ग्रामेज ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये प्राइस हाइक अब कंपनी को ही हर्ट करने लगी क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैवंट हाइक द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैगी का मार्केट शेयर इम्पैक्ट हुआ है, मैगी का वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ है। नॉट ओनली दैट, इफ यू लुक एट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देयर ऑल्सो द कंपनी हैज ट्राइड टू really price the products much ahead of the markets and much ahead of the competition. So the price hikes are hurting volumes for the company. Yesterday लोगों को लगा कि margin performance बहुत strong है, लेकिन margin performance was there because of aggressive price hikes, but that also is coming at a cost and market today realized that stock is down 3%. And Santo, here also if you look at the royalty arrangement that is due for renewal in 2024. HUL ने अपने रॉयल्टीज़ बढ़ाए, तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि शायद यहाँ भी एक रॉयल्टी का ओवरहैंग रहे। Clearly, I think that it was a trade-off between volumes and margins, and Yes. Nestle chose to go with margins, and clearly that's something that seems to have disappointed the market. JP Morgan appears to be among the few brokerages which are still positive on the stock. It has retained its overweight and also said that the moderation in volume growth, that could be a short-term effect, and also the improvement in margin, hopefully that should sustain, because the company has also been doing quite a few things in controlling costs, and Yes. that most likely should sustain. Besides the fact that you have also input costs coming off a little bit, at least they are not as high as they were a few quarters back. So these are some of the things that can be said in favor of Nestle. However, for the time being, clearly the stock is under pressure. The last stock on my watch list this afternoon is United Spirits. Again, at this point, it's more of the performance of its rival Pernod Ricard that seems to be weighing on investor sentiment. Pernod Ricard reported strong set of numbers for the recent quarter, and in comparison, when you look at United Spirits numbers, they've not been all that good. And according to Macquarie, clearly that Pernod is clearly narrowing the gap at this point in time. And besides that, United Spirits is also grappling with its own set of problems because of the Delhi market once again reverting to the old liquor policy. The company seems to be facing some kind of challenges there also. In addition, all the restructuring moves that United Spirits has made over the some time back, that will take some time to actually start showing in the number. Macquarie is bearish on the stock and has a underperform rating and a target price of 650 for United Spirits. Absolutely. So that liquor stock has been struggling, especially after the policy change in Delhi. Volumes haven't been picking up, and obviously, as Santo is mentioning, कि जो Pernod Ricard है उनका मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ रहा है वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये तो बात हुई लिकर की। फ्राइडे है तो सैंटो एक पॉइंट बनाते हैं हमेशा लिकर के बारे में बात करने के लिए। कोई पार्टी वार्टी रख, you're quick to draw the connection there, but let me tell you, it's just coincidence. तो उनको जब पार्टी देने बोलते हैं तो वो ऐसे ही बात करते हैं मेरे साथ। लेकिन सैंटो आज एक स्पेस बहुत हॉट था, वो सीमेंट। और सीमेंट की बात करें तो शायद बाज़ार को ये फीलिंग आ रही है कि अदानी ग्रुप के जो एग्रेसिव प्लान्स है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, वो शायद इतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितने शुरू में लग रहे थे। शायद एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट आप सीमेंट इंडस्ट्री को दे सकते हैं कि शायद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो शायद एक नए प्लेयर, एक नए ग्रुप के आने के बाद आती थी, वो अब प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ी हल्की पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहरहाल सीमेंट कंपनीज हैव हाइक्ड सीमेंट बैग प्राइसेस बाय अप टू 15 रुपीज़ पर बैग। वेस्ट इंडिया में ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ है। साउथ और नॉर्थ मार्केट की बात करें तो 5 to 10 रुपीज़ का प्राइस हाइक हुआ है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्राइस हाइक हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है कि 3-4 महीने के गैप के बाद यहाँ एक प्राइस हाइक आपको देखने को मिला है। डीलर्स अगर आप देखें, जो एंटिक रिसर्च ने डीलर रिपोर्ट बनाई है सीमेंट के ऊपर, तो डीलर्स को ये लगता है कि यहाँ से भी आपको सीमेंट के प्राइसेस स्टेबल टू हाइकिंग दिखाई देंगे। तो अगर ये सिनेरियो सच है कि यहाँ से प्राइसेस स्टेबल हो जाएं, गिरना बंद हो जाएं और सस्टेनेबली प्राइस हाइक होती रहे, तो शायद सीमेंट कंपनीज के मार्जिन और एबिटा में काफ़ी अच्छी तरीके से
इम्प्रूवमेंट आपको Q4 में भी आती हुई दिखाई पड़ेगी और शायद इसीलिए आज सभी के सभी सीमेंट स्टॉक्स चाहे लार्ज कैप्स हों चाहे स्मॉल कैप्स हों यहाँ इम्प्रूवमेंट आपको दिखा शेयर प्राइसेस में। अल्ट्राटेक सीमेंट, दालमिया भारत सीमेंट, रैमको सीमेंट, सागर सीमेंट, ऑब्वियसली देयर वाज न्यूज़, हाइडेलबर्ग सीमेंट, इन सभी सीमेंट स्टॉक्स में आज 2 से 5% के बीच की तेजी बनी रही। And also, Yatin, cement stocks in general have been in focus ever since the budget, since the Yes. finance minister's remarked that probably the ministry will look into revision of the GST. rates, So there's yes, some yes. bit of a hope trade in cement stock as well, Absolutely. which is keeping the sector flying. Well, and that's all that we have in this episode of Closing Bell. Thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And have a great weekend. We'll catch you back again on Monday morning at 9 a.m. In the meantime, for all news, views, analysis, stay logged on to moneycontrol.com.